अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नासी चिकन बिरयानी बना रहे हैं। जी हाँ, मलेशियन स्टाइल में चिकन बिरयानी बना के दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और नवाब्स किचन के स्टाइल में बहुत ही आसानी से बना के दिखाएंगे। चलिए। मलेशियन स्टाइल चिकन बिरयानी बनाने के लिए चिकन को भी मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह वॉश करा हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। इसी चिकन में हम लोग फेनल सीड्स ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो फेनल पाउडर ऐड कर सकते हैं। फेनल सीड्स के साथ साथ इसी में हम लोग रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे। इसी मैरिनेशन के प्रोसेस में हम लोग कर्ड भी ऐड करेंगे, दही। चिकन को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह मिक्स करे बाद 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। जब तक ये मैरिनेट नहीं होता तब तक हम लोग राइस का प्रोसेस देखेंगे। चलिए। राइस प्रिपरेशन के लिए बाउल गर्म हो गया है। इसी में हम लोग फर्स्ट ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ साथ इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ब्लैक पेपर कॉर्न भी डालेंगे। इमीडिएटली हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा पकते ही इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद इसी में हम लोग टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटो प्यूरी ऐड करे बाद इसी में हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और नेक्स्ट पानी भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी वाटर में हम लोग कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। राइस ऐड करने से पहले ही इसी में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे।
राइस बॉईल होए तक हम लोग करी का प्रोसेस देखेंगे। पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। नेक्स्ट रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा ऑयल में पकते ही इसी में हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियंस परफेक्ट ब्राउन शेड में आ गए। इसी वक्त पहले ही मैरिनेट करा हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। आज जो बिरयानी बनाए थे हम लोग बहुत ही मतलब एक डिफरेंट स्टाइल में बनाए थे। राइस अलग, चिकन अलग से बॉईल करे थे। जैसा हम लोग दम डालते हैं उसको बिल्कुल ही अलग अंदाज में मलेशियन चिकन बिरयानी बनाए हैं। माशाअल्लाह इतना मज़े का है। मैं इसको बहुत कम अंदाज में मतलब अपने हैदराबाद स्टाइल के बिरयानी के से मतलब आसपास भी नहीं रहता इसका टेस्ट समझा था। बिल्कुल ही बहुत ही मज़ेदार है। मैं खुद शॉक हो गया हूँ। बहुत ही मज़ेदार है। और पीस भी देखेंगे। सीरियसली बहुत बहुत टेस्टी है। अगर आपके घर पे वक्त मिला कभी ये बिरयानी स्टाइल भी बनाइए। शायद कोकोनट मिल्क है, टमाटो प्यूरी है राइस के अंदर, शायद उसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार बना है। बहुत ही डिफरेंट है। डेफिनेटली आपके घर पे भी कोशिश करिए। उससे पहले हम लोग नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।